Hello everyone. In today's class, we'll be solving certain doubts that have been put forward by our students. The first doubt transaction is, it says paid wages for installation of machinery. Now, when you pay wages for installation of machinery, we know that this wage or wages paid for installation of machinery, this expense needs to be capitalized, that is added into the cost of machinery. Reason being, rule होता है कि जितने भी expense होंगे asset को खरीदते समय, till that asset is installed and is in use in our factory premises, वहां तक जितने भी expenses होंगे वो सारे आपके मशीनरी की एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे. तो आपका जो वेजेस पेड है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड द अमाउंट इज गिवन एज ₹2000, ये मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे एंड वी विल पास द एंट्री एज machinery account debited to cash account since the wages are being paid and the amount is ₹2000. अगर इसके साथ और भी कुछ दिया होता, जैसे कैरेज पेड फॉर ब्रिंगिंग दैट मशीनरी इन आवर फैक्ट्री प्रीमाइसेस, तो वो भी मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाता, हम मशीनरी अकाउंट को उतने अमाउंट से डेबिट कर देते. आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर. The second transaction, it says purchase timber from Singh and Company, Punjab. And let me tell you that our business, the books of accounts which we are purchasing, it's also there in Punjab. जिस business के हम books of account prepare कर रहे हैं, that business is also there in Punjab. और ये business भी furniture का है. ये business भी जिसके हम books of accounts purchase कर रहे हैं वो furniture का है, और ये business जो है वो establish पंजाब में है. So what we are doing, purchase timber from Singh and Company, Punjab. List price 20,000. List price of the goods purchased 20,000, and CGST and SGST is levied at the rate of 6%. Also, we have to give the treatment for 10% trade discount. 10% trade discount. Now see, we have purchased the goods. The list price of the goods are given. So we'll start with, let's show the working first and then we'll pass the entry. List price of the goods are 20,000. We know that trade discount is not to be shown in the books of account. So first we'll give the accounting treatment for trade discount. So less trade discount at the rate of 10%. 10% of 20,000 is 2,000. So the total purchases to be recorded in the books of account is for ₹18,000. So 18,000 से हमारी purchases record होंगी. Purchases account will be debited. Next is CGST and SGST is levied. So let's add CGST at the rate of 6%, add SGST at the rate of 6%. So 18,000 का 6% अगर हम कैलकुलेट करते हैं
तो हमारे पास आ जाता है 1080। फाइन। सो ये दोनों हमारे बन जाएंगे इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। हमें पता है ये हमने दोनों पे करने हैं अलोंग विद द परचेज प्राइस, तो ये भी आपके दोनों इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी डेबिटेड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। और हमारे पास जो टोटल परचेज टिम्बर फ्रॉम सिंह एंड कंपनी लिखा हुआ है, और कैश नहीं लिखा, यानी कि सिंह एंड कंपनी मेरा क्रेडिटर बन जाएगा। फाइन। सो मेरा टोटल आ गया 20,160 से सिंह एंड कंपनी विल बी शोन एज माई क्रेडिटर, एज माई क्रेडिटर। और क्रेडिटर जब भी मेरे बिजनेस में इंक्रीज होते हैं हमेशा क्रेडिट होते हैं। So the entry which we'll record in our books of account will be purchases account debited 18,000, input CGST account debited amount 1,080, input SGST account debited amount 1,080 to Singh and company, ये हमारे क्रेडिटर बन गए with the total amount 20,160. The next doubt transaction which we have received from our students is, it says out of the above, that means these goods, timber used for furnishing office, fine, and the amount of timber used for furnishing office is 5,000. We know that our business is of furniture. In the beginning, I have told you that the business is of furniture, and again it is placed in Punjab. Fine. So that means ये जो timber हमने use किया है for furnishing office, यानी कि ऑफिस के फर्नीचर को बनाने के लिए, तो हमारे जो परचेज होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे और हमारा एक और एसेट फर्नीचर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाएगा। और क्योंकि हमारा फर्नीचर का ही बिजनेस था, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग फ्रॉम दी बिजनेस फॉर मेकिंग अप एन एसेट। तो इसका हमारी जो जनरल एंट्री बनेगी, फर्नीचर अकाउंट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में 5,000 से आ जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 5,000 to purchases account and the amount will be 5,000, क्योंकि 5,000 का जो फर्नीचर हमने टिम्बर जो हमने परचेज किया था वो एज अ रॉ मटेरियल तो यूज हुआ नहीं, वो तो यूज हुआ फॉर फर्निशिंग अवर ऑफिस, यानी कि हमारे अपने ही ऑफिस का फर्नीचर बनाने के लिए यूज हुआ। तो फर्नीचर एक एसेट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में आ गया। फर्नीचर एसेट जब इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा, और परचेजेस क्योंकि एज अ रॉ मटेरियल यूज नहीं हुए तो हम परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे। अब इस केस में बेटा हमने पहले भी देखा था व्हेन वी लर्न द कंसेप्ट ऑफ रिवर्स जीएसटी, कि अगर कोई भी हमारा गुड ड्राइंग्स के पर्पस के लिए या फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एज फ्री सैंपल्स या चैरिटी के पर्पस के लिए या लॉस बाय फायर, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ये जो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी जो हम पे करते हैं अलोंग विद द परचेजेस, इसका रिवर्स ट्रीटमेंट एंट्रीज में दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी रिवर्स में पास नहीं होगा। रीजन ये है कि इन गुड्स को हमने एक एसेट बनाने के लिए, बिजनेस के एक एसेट बनाने के लिए यूज हो गया, इसीलिए
हम इन गुड्स के ऊपर जो रिवर्स जीएसटी का ट्रीटमेंट है वो नहीं देंगे. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. The next transaction, it says MS Auto A Delhi purchased 500 pieces of car horns at the rate of 200 each. That means 500 pieces of car horns at the rate of rupees 200 each. So the total value of the horns will be 1 lakh. Then less 10% trade discount, less trade discount at the rate of 10%. This is 10,000. So the total value of purchases will be 90,000. Now since the business is in Delhi and they are purchasing the horns from a vendor in Chandigarh, so IGST will be levied, and IGST at the rate of 12%. 12% of 90,000 will be 10,800. So if I add 10,800, the total invoice value will be 1,08,000. And if I want to pass the journal entry, this will be our total purchase account. Purchase account will be debited. Entry would be purchases account. Purchases account debited 90,000. Input IGST account. Input IGST account debited 10,800 to, it's not written anywhere, it's not written that it is this purchase is for cash. That means this purchase is for on credit basis from MS Auto Horns. So MS Auto Horns will become my creditor. So that is why their account will be debited. So MS Auto Horn, and they will become creditor by the amount 1,08,000. I hope this transaction is clear to all of you. Now the next down transaction, it says MS Vash Traders Delhi purchased Parker pens at the rate of 200 each, less trade discount at the rate of 15% from Luxor Pen Limited Delhi. CGST or SGST levy hoga at the rate of 6% each, and cash discount at the rate of 5% is also given. Number of pens purchased were 500. So the total purchase price, that is the list price जो कोट हुआ वो कितना होगा, 500 pens were purchased at the rate of rupees 200 each. So the total price, it will be 1 lakh. Now since this purchase is being made from Luxor Pen Limited Delhi, अब दिल्ली में ही हमारा बिजनेस है, दिल्ली से ही हमने परचेज किया है, तो CGST and SGST will be levied. And first of all, we are going to give, see, two discounts are given, trade discount and also cash discount. So trade discount, we first levy trade discount, less trade discount at the rate of 15%. So if we calculate 15% of 1 lakh, we'll get 15,000. So the total purchase price will be 85,000. Now to this, we are going to add CGST and SGST. Add CGST account, CGST at the rate of 6%. Add SGST at the rate of 6%. So if we calculate
85,000 into 6%, we'll get 5,100. So we'll add 5,100. The total purchase price will be 95,200. Since it's written that cash discount is also allowed at the rate of 5% and all the purchases were made on the cash basis. So let's calculate 5%. We are going to allow less cash discount at the rate of 5% and all the purchases are being made on cash basis. So if we allow 5% of 95,200, so the amount will be 4,960. 4,960, and if we'll subtract this, the cash that needs to be paid to the vendor will be 91,240. Let's correct the small error. It should be 7. So if we'll subtract, we are going to get 91,440. I hope this transaction is clear to all of you.